win. So first title will be cleavage of O bond H. So we have to break down alcohols. So we'll be studying first properties of alcohols only. So chemical properties, okay, and in that we'll see cleavage of O bond H. So let us see first in that एक्टिव मेटल्स. जैसे बताया था मैंने आपको कि अगर एक्टिव मेटल के साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है तो so we're going to prove that how this will be seen. So alcohols made with metal, what will happen? It will form what? And hydrogen gas will be released. ये ROM का मतलब क्या? M stands for metal and R मतलब alk. So it forms what? Metal alkoxide. And hydrogen gas is released. If I go with the CH3, CH2OH, ethanol, when reacted with sodium metal, what will happen? The hydrogen atom released. So that is cleavage of O bond H will take place. Cleavage of O bond H. You will get your answer CH3, CH2O. इतना हो गया. अब H की जगह पे कौन metal? Sodium. So sodium enters here and metal alkoxide. So how to write down metal alkoxide now? Here is name, which is the metal sodium. Metal becomes sodium. Alk की जगह पे अल्काइल ग्रुप कौन सा था? eth. So name becomes what? Sodium ethoxide. And I explained you all earlier that how this hydrogen gas will be in the form of what? Brisk effervescence. कैसे दिखेगा हमको? Brisk effervescence के फॉर्म में. एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपने. If I take this here using so what will happen here is CH3O or hydrogen gas released. Al will enter. In place of O, Al will enter. But the valency of aluminium is 3. So aluminium valency 3 इसलिए thrice. यहाँ पर thrice हो गया, इधर 3. तो H कितना हो जाता है? 3. But H यहाँ पर कितना है? 2. 6. So this becomes 6. So I'll put here 6. So I'll put here 3 2s are 6. Aluminum. Clear? Why here 3 I put in here? Because valency of aluminium is thrice. That's why to balance this. नाम वही रहेगा. Aluminium. CH3 को हम बोलते हैं मीथ और O को ऑक्साइड. So aluminium. Everybody. So first reaction is the others. तो अभी ये रिएक्शन क्या प्रूव करता है? कैसे लिए? इथेनॉल मिथेनॉल लिए, मतलब लोअर अल्कोहल्स लिया है. तो लोअर अल्कोहल्स को एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करना बहुत इजी है. If I take secondary or tertiary alcohol, the reactivity will be very, very slow. So in short, how? I'll clean the board. Look here. As we move from prime to secondary and secondary to tertiary, the age goes on decreasing. Or affinity
or reactivity goes on decreasing. So ethanol are primary alcohol are most reactive, tertiary alcohol are less reactive. Explains that primary alcohols are acidic in nature, tertiary alcohols are least or not acidic in nature. Primary takes place, so they are acidic in nature, but tertiary alcohols cleavage does not take place easily and hence they are least reactive in nature. क्या है cleavage of O bond H बताना है तो आपको किससे select करना है? You have to select the primary alcohol और तो उसमें आपको least number of carbon atom वाला select करना है. जितना ज्यादा कम carbon atom होगा उतना ज्यादा cleavage of O bond H होगा. ब्रांचिंग वाला है तो मोर द नंबर ऑफ ब्रांचिंग मोर द फेवर ऑफ O bond H का क्लीवेज हो जाएगा. क्लियर एवरीबॉडी नाउ हियर इज सो सेकंड पार्ट सो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. तो क्या स्टेटमेंट बना कि अल्कोहल्स व्हेन रिएक्टेड विद एक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एंड इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड O bond H with the cleavage of O bond H and it forms what? Metal oxides. It forms what? Metal oxides. Second part. B point with acid anhydride, comma, carboxylic acids. Okay. So we can use what? We can use acid anhydride, acyl chloride. So one by one we will go. We have to react what? Alcohols. So directly example लेते हैं तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा. जनरल रिप्रेजेंटेशन में दिखा देते हैं कैसे करेंगे. R C double bond O, R C double bond O, O. R C double bond O, acid anhydride. Acyl chloride, R C O Cl, Cl, and carboxylic acid is R C O OH. So these are the general presentation of acid anhydride acids. So we'll go directly with example, starting with carboxylic acid. If I take ethanoic acid, ethanoic acid. So formula of ethanoic acid हम सबको आता है CH3COOH. OOH. Now we have to react with alcohol. Alcohol is what? ROH. But for my convenience, I'll write down vice versa, उल्टा लिख O और यहाँ पर alcohol ROH alcohol. But for our convenience मैंने उल्टा लिखा है. क्या convenience है पता बोला हम लोग ने cleavage of what? O bond H of alcohol. तो alcohol का O bond H cleaved हो जाएगा यहाँ से और carboxylic acids का in carboxylic acid C bond O breaks, in alcohol O bond H breaks this and you CH3 C double bond O. ये बाहर हो गया. Remaining is what? OC2H. What? H2O plus what? H2O. So what is the functional group form? R C double bond O O R. O O R. So it is called as esters, and hence this reaction is also called as इसलिए नाम अभी बताया ताकि आपको मालूम पड़ जाए क्या कर रहे हैं. Conversion of alcohol to esters is also called reaction is therefore called as esterification. अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? अब इस रिएक्शन में esters तो बन गया. Water molecule is added to esters, it gives you a reversible reaction. Reaction वापस reverse हो जाएगा. Reversible reactions. So name of the नाम alkyl alkanoid. तो O के साथ में जो ग्रुप होता है that becomes alkyl.
so ethyl. Fermentums, so ethanoid. Ethyl, ethanoid. Clear? सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अभी यहां पर. If I go with the alcohol, same लेते हैं. Now what will happen? Cleavage of O bond H of alcohol. O bond H of alcohol से क्या हो जाएगा? HCl बाहर. Remaining is your answer. ईस्टर बनाना है ना, तो R. So CH3, CH2, C double bond O as it is. CH3, CH2, C. ये HCl क्यूब्ड हो गया, ये अटैच हो जाएगा. OC2H5 plus what? HCl. OC2H5. Getting everybody here? So esters is formed along with acid is formed. Acid is obtained as a byproduct. So we can add some base. So we can add pyridine. Pyridine, if it is used as a base, then the reaction reversible nahi hoga. Reaction will be irreversible. Okay. Now, students, now you have to speak the name of the reactants and products. Come on. Who will give me the answer? Name of the reactant. Am I audible to you, students? You have to name the reactant. Students? Yes or no? Chloropropanone. नहीं. ठीक है, I'll explain. ये acyl chloride है ना, RC double bond OCl acyl chloride. So how many carbon? 2, 3. 1, 2, 3. And do you all know the pattern of acyl chloride? Alkanoyl chloride. Alkanoyl chloride. Now speak the name. Pattern of acyl chloride is name. चलो अभी बताओ. Pattern is alkanoyl chloride. किससे का नाम आंसर? Yes, correct answer है संश्रुति वर्धक propanoyl chloride. The name becomes what? Propanoyl chloride. बराबर है? Correct answer है ओम. Propanoyl chloride. The name of this compound becomes propanoyl chloride. Ethanol. Name the product. प्रोडक्ट का नाम बताओ. इथाइल प्रोपेनॉइड. यस रोहन, करेक्ट आंसर है इथाइल प्रोपेनॉइड. गेटिंग एवरीबॉडी हियर? So what? Cleavage of O bond H explains here that this features. देखो अल्कोहल्स लोअर ही लिया है. थर्ड एग्जांपल लेते हैं. by using what? Acid anhydride. CH3, C double bond O, 3, C double bond O, O. Okay. Plus what? Methanol लेते हैं अभी example. So cleavage of what? O bond H takes place. Cleavage of O bond H takes place यहां से, और यहां पर इधर ब्रेक हो, बताया था ना C bond O break होता है. So this part is removed outside. Remaining is our answer.
Remaining bond O, OCH3. CH3, C double bond O, OCH3. Plus what? CH3, COOH. Plus COOH. As carboxylic acid is obtained as a byproduct, we have to neutralize this. We can neutralize by using what? Pyridine. Pyridine will get your answer. So name the reactant. Name the reactant. First reactant. Acid anhydride का नाम बताओ. क्या म्यूट क्या लिखा है वेदांत? एसिटिल एनहाइड्राइड गलत आंसर है. मिथाइल इसका नाम पूछ रहा हूं, इसका नाम. इथाइल एनहाइड्राइड. Ethanoic anhydride. This is correct. Soham. Yes, even Dhruv Jain is correct. Both the answers are correct. ठीक है. Common name is acetic anhydride. Dhruv Jain correct. Give the correct common name. Acetic anhydride. और so कितने कार्बन टर्म है? 2 कार्बन टर्म. 2 कार्बन टर्म वाला एसिड कौन सा होता है? इथेनोइक. और उसका एनहाइड्राइड है. इसलिए आईयूपीएसी नेम क्या आएगा इसका? Ethanoic anhydride. Correct, Soham. So, common name is acetic anhydride and IUP anhydride. Getting everybody here? Come on. Speak the IUPAC name of ester. Methyl ethanoate. Correct है? Esters बराबर आता है. बाकी नहीं आ रहा है राशन. राशन correct answer. Methyl ethanoate. Cleavage of O bond H takes place. So we can prove by 2 reactions that by using active metals or by using what? Acid anhydride, acyl chloride or carboxylic acids, we can prove that alcohols are acidic in nature. Okay. So in this both the reaction, or in all the 3 reaction, what? Again I repeat. See, in all the 3 reaction, इस alcohol में कौन सा group introduce किया है? RCO. RCO. So can you generalize the name of this reaction? When a RCO group is introduced in any chemical reaction, the reaction is called as. What is RCO? RCO किसका functional कौन सा है? R C double bond हो. ठीक है? नहीं. Speak. क्या पूछा मैंने? क्या किया हम लोग ने इंट्रोड्यूस? RCO इंट्रोड्यूस किया अल्कोहल में. नो आंसर नित्या. R C double bond O का मतलब होता है असाइल. R C double bond O का मतलब होता है असाइल. सो हम सब RCO ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है and hence the reaction is called as acylation reaction. In all the 3, we have introduced RCO group in the alcohol. Acylation of alcohol. Or esters is prepared, therefore is also called as esterification reaction. So in this we have done the cleavage of what? O bond H. Now we move to further topic. Now with the second point, second chemical property, cleavage of C bond O. Let me clean the board first and then we move. Now we go second chemical property, cleavage of
C bond O सबको ब्रेकिंग, तो अभी हमको C bond O ब्रेक करना है. The very first property with hydrogen halide. हाइड्रोजन halide का मतलब हो गया HX. So as we move from HCl to HBr, order of reactivity goes on decreasing. HCl is most reactive, HI being least reactive. बराबर है? As we move from HCl to HI, the order of reactivity goes on decreasing. हम लोग, हमें पता है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होते जाता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव. सो जब सिंगल है तो बहुत शैतान है, बट जैसे इनके पास पार्टनर आ गया HBr, HI, जैसे ही इनको अपना फ्रेंड मिल गया, इनकी रिएक्टिविटी उल्टी हो जाएगी. HI बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, तो शांत था, कुछ है ही नहीं मस्ती करने के लिए, बट इसके पास पार्टनर आ गया तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई. पर HCl का उल्टा है, था पर पार्टनर आ गया तो शांत हो गया. बराबर है? ये केस में शायद इसका शादी हो गया ना, पार्टनर आ गया इसलिए एक्टिव हो गया है. तो HCl is being least reactive and HI is the most reactive. How to remember this? Halogens are a proper, उसकी पार्टनर्स में उसका उल्टा हो जाता है, ऐसे याद रखना है. ओके, सो गेटिंग इट हियर. एंड यू हैव टू, HI है ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग. सो लेट अस सी हाउ टू कैरी आउट द रिएक्शंस. पहले जनरल रिएक्शन दिखाता हूं आपको मैं. अल्कोहल when reacted with alcohols, when reacted with hydrogen halides, alcohols when reacted with hydrogen halide, तो क्या मिले, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लीवेज ऑफ C bond O ना. तो and what answer you will get here is RX plus what, H. So alcohols when reacted with hydrogen halide, water molecule is removed and you will get the answer alkyl halides. Here, so let us see one by one with HCl, HBr and HI. Before I move with the alcohol, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्लीवेज ऑफ O bond H is more popular in primary alcohol. अभी उल्टा है, अभी क्लीवेज ऑफ C bond O करना है ना. C bond O cleavage is most favored in tertiary alcohol and least favored, and hence the order of reactivity for cleavage of C bond O, order of reactivity for cleavage of is from primary to tertiary. Cleavage of what, C bond O increases from primary to tertiary. Tertiary cleavage of C bond O, इसका मतलब tertiary alcohol are most reactive, primary alcohol are least reactive. Bond O, clear? So if I go reaction first with HCl, तो कैसा रिएक्शन आएगा, लेट अस सी. CH3, CH2, OH first.
येस वेदांत, काय बोलायचं तुला? So what I mentioned here is वीडियो कट होता है। आता होतोय का कट व्हिडिओ? वेदांत आता ओके ओके नित्या, लेट्स स्टार्ट। So now look at the alcohols, the three alcohols I have written on the board. Here it is primary alcohol. The three alcohols are primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol. All the three will be react with HCl. Okay. The three alcohol. Now what will happen? जैसे बताया था, tertiary alcohol is most reactive in nature. So it cleavage of C bond O बहुत आसानी से हो जाएगा. Cleavage of C bond O बहुत आसानी से हो जाएगा. Most, and it will combine with HCl. And what answer we'll get here is CH3, Cl plus what? H2O. You get your answer. Primary and secondary alcohol, they are less reactive. उनका cleavage of C bond O बहुत कम है. तो क्या वो डायरेक्टली HCl के साथ रिएक्ट करेगा? क्योंकि HCl भी क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है, और HCl भी क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है. और प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आल्सो लीस्ट रिएक्टिव. दोनों वीक है, तो काम कैसे चलेगा अभी? इसलिए क्या करेंगे हम लोग? We will use a catalyst zinc chloride. We will use a catalyst zinc chloride. यहां पर cleavage of C bond O हो जाएगा. Cleavage of C bond O, and this water molecule is removed outside. Answer CH3 CH CH3 Cl plus what? H2O. अल्कोहल बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव. सो इसलिए सिर्फ कैटलिस्ट डाल के चलेगा नहीं, यहां पर हीट भी करना पड़ेगा. अल्कोहल में कैटलिस्ट एंड हीट, सेकेंडरी अल्कोहल में ओनली कैटलिस्ट, टर्शियरी अल्कोहल में कुछ भी जरूरत नहीं. ऐसा सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑर्डर ऑफ increases from primary to secondary and secondary to tertiary. So you will get the answer CH3 CH2Cl O plus what? H2O. Clear? Now this, I hope you know the reactants and products name, so I'm not discussing the name of the reactants and products. So now listen here. Plus ZnCl2, HCl plus ZnCl2 together is called as what? It is Lucas reagent. Plus ZnCl2 together is called as what? Lucas reagent. So the question also may arise of Lucas reagent on ethanol. तो आपको जब लुकास रिएक्शन बोला है तो कैटलिस्ट की तरफ है ZnCl2 और HCl रिएक्ट, दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? लुकास रिएक्शन. ये जो प्रोसेस है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HCl, दिस मेथड इज आल्सो as Groove's process.
reaction of alcohol with a Bruce process, and ZnCl2 plus HCl is called as Lucas reagent. Okay, so we move to the second part, that is with HBr. अभी HBr की reactivity HBr की reactivity HCl से थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसलिए कैटलिस्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Lucas reagent, HCl plus ZnCl2 is called as Lucas reagent, and alcohol with HCl, reaction of alcohol with HCl is called as Bruce process, correct? So we move further for HBr. So now we'll discuss with HBr. Yes. HBr is freshly prepared. कैसे prepare करेंगे इसको HBr को? HBr is prepared by using and sodium bromide. Sodium bromide, both are reacted together. When both are reacted together, what will happen? You will get here is this part. आपको क्या मिल जाएगा? HBr मिल जाएगा. ठीक है? H2 है तो इधर 2 कर देंगे, तो एंड सोडियम सल्फेट. मतलब ये क्यों किया HBr बनाने के लिए? ताकि HBr की क्वालिटी हमको अच्छी मिलेगी. We'll get a better quality of HBr. So when you're preparing it for primary alcohol, you can use constant H2SO4. But for secondary and tertiary alcohol, you have to use dilute H2SO4. That is there कि primary, secondary and tertiary alcohol, the order of reactivity goes on what? Increasing. So secondary, इसके लिए उनमें dilute H2SO4 इस्तेमाल किया, तो बस है primary alcohol least reactive है, इस H2SO4 इस्तेमाल करना है, बाकी रिएक्शन सेम. What I spoke, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, क्या कर सकते हैं पर अभी. एयरटेल में भी नेटवर्क नहीं है, एयरटेल में भी नेटवर्क बहुत ठीक है ना. नित्या आप नेटवर्क में आ जाओ, आप नेटवर्क. तो अभी सेकेंडरी अल्कोहल है, HBr है, और क्या बोला? HBr फ्रेशली प्रिपेयर करना है, तो HBr फ्रेशली प्रिपेयर करना है, इसलिए एरो पर क्या लिखूंगा? प्लस H2SO4 लिखेंगे, NaBr plus H2SO4. Now can you speak the answer, students? प्रोडक्ट क्या आएगा? Who will speak the answer? एक्शन को. टू ब्रोमोप्रोपेन. You will get the answer 2 bromopropane. फाल्गुनी वेरी गुड. आज फाल्गुनी का आंसर है, इतने दिन बाद फाल्गुनी. ब्रोमोप्रोपेन नहीं बोलना है रिया, क्या बोलना है? 2 ब्रोमोप्रोपेन. ठीक है. तो यहां पर क्या हो जाएगा? दिस पार्ट विल बी रिमूव्ड आउटसाइड. T bond O हो जाएगा and you'll get the answer CH3 CH CH3 and B plus what? H2O. And hence you get the answer sec propyl bromide or 2 brom.
So getting everybody with HBr. Now here, if you carry out the reaction by using H, say karenge with HI. So HI is what? Most reactive in nature. HI is most. When simple alcohols are reacted with HI, you get a better product. But you cannot use secondary or tertiary alcohol with HI. Why? Because HI खुद भी बहुत ज़्यादा alcohols are highly reactive. तो क्या हो जाएगा? Explosion हो जाएगा. भड़ाम. It will break down and alkyl iodine. It will form I2. Iodine release हो जाएगा. So it is not a better method iodide by using HI. So instead of HI, you can use sodium iodide. In place of HI, we can use sodium or potassium iodide. Because HI being highly reactive, it does with secondary and tertiary alcohol. Primary alcohol के लिए ठीक है, चला सकते हैं काम, but not for secondary and tertiary. अभी कितने को समझ में आया? पता चल जाएगा. मैं क्वेश्चन पूछता हूं. To listen carefully the question. My question. Okay, so let's see on the board. You have to take what? 3 test tubes लेना है हमको. Test tubes. What is present? तीनों टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल प्रेजेंट है, बराबर है. और हमने क्या डाल दिया तीनों टेस्ट ट्यूब में? लुकास रिएजेंट. In this test tube, alcohol is present with Lucas reagent. As soon as we add 2 layers, यहां पर separate layers in all, बराबर है. But अभी but है, 2 separate layers are formed long time, that too on यहां पर after यहां पर quickly. Test tube A. Again, I repeat. Listen carefully, my dear students. There are 3 test tubes labeled as A, B, and C. In the alcohol, तीनों में alcohol डाला है. Test tube A, test tube B, and test tube C consist of alcohols. And then in each of the test reagent. Okay. As soon as Lucas reagent, this test tube C quickly gives the product. Test tube B gives 2 separate layers after few minutes, मतलब थोड़ी टाइम के बाद. But C में आता ही नहीं है या फिर नहीं आएगा 2 separate layers. Test tube A may show 2 separate layers after a very long time. So you have to identify which test tube consists of primary, secondary, and tertiary alcohol. First, primary alcohol, A primary alcohol. Correct answer, Ami? Yes, yes. Correct. सबका आंसर राइट है, मतलब सब बच्चों का समझ में ऐसा नहीं का. वेरी गुड. संस्कृति करेक्ट आंसर, करेक्ट है. बी ओम करेक्ट है. वेरी गुड. पूर्वी, इमानी करेक्ट आंसर्स. वेरी गुड. एवरीबॉडी इज करेक्ट. मतलब आपको ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके दिया है, but this question was asked in JEE.
अरे जानवी करेक्ट है उत्तर तुझा पण was asked in JEE पर वो सिर्फ स्टेटमेंट वॉइस में लिखा था, डायग्राम फॉर्म में नहीं था। डायग्राम फॉर्म में आपको फटाफट समझ में आ गया। दिस इज क्वेश्चन 11 या 12 में आया था, 4 मार्क क्वेश्चन था, तभी पैटर्न 8 मार्क का क्वेश्चन में आया था ये। So getting everybody here, so if you know the properties की reactivity किसका कम है किसका ज्यादा है, you can answer very well. What is Lucas reagent? Answer. What is Lucas reagent? अभी पढ़ाया था ना, what is Lucas reagent? Come on. Good students, HCl plus ZnCl2. Correct answer. Roshan, correct answer. Yes, yes, everybody, correct answer. आरती का राइट है, हिमानी राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, सबका आंसर राइट है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। HCl plus ZnCl2 together is called as what? Lucas reagent. So getting everybody's topic clear. So now we go to the second topic. Let us see reaction with phosphorus halides. So we have to take px3 and px5 for either लिख देते साइड में, px3 and px5 phosphorus trihalides and phosphorus L3, PBr3 and PI3 बराबर है, PCl5, PBr5 and PI5. So and phosphorus pentahalides. Phosphorus PBr5 and do not exist. ये ऐसे कंपाउंड्स होते ही नहीं है। तो उसी तरह से Br and I they ऐसा क्यों होता है? Because the atomic size of phosphorus and bromine properly, they are not matching properly, they are not able to form the bonds properly. तो वो ट्राई हाइलाइट्स के साथ में कैसे भी करके थोड़ा बहुत बॉन्ड बना देता है, तो 5 के साथ में बना ही नहीं पाता है बॉन्ड, and hence this becomes what? They do not exist. बाकी ये दोनों स्टेबल, PCl5 they both are stable. Cl का एटॉमिक साइज छोटा है ना, छोटा एटॉमिक साइज है तो it can form proper bonds with it. PCl5 are stable, these are least stable, they do not exist. So let us see one by one. So with PX3 phosphorus trihalides, इनमें क्या करना है आपको? ये रिएक्शंस में बहुत अच्छे से the byproducts very well, you can answer the questions thoroughly. So what? When reacted with phosphorus trihalides, alcohols, when reacted with phosphorus, we are studying what cleavage of C bond O. तो C bond O का cleavage हो जाएगा यहाँ पर, C bond O का cleavage हो जाएगा, तो X entry अंदर, you will get here is RX, you will get RX. X 3 बार है, इधर 3 डाल दो, तो क्या? X is 3 times, put your 3
R becomes 3, so you have to put here 3. Okay. 3H, 3O, and 1P. 3H, 3O, and product H3PO3 हो गया. तो कंपलसरी ये तीन जब इस्तेमाल करेंगे पीसीएल फॉस्फोरस एसिड H3PO3 का नाम क्या है? फॉस्फोरस एसिड. ये कंपलसरी बाय प्रोडक्ट मिलेगा आपको. यू विल ऑलवेज गेट फॉस्फोरस एसिड्स. ओके, सो एक एग्जांपल देख लेते हैं. प्लस PCl3. सो करना है आपको, यहां पर CO का क्लीवेज करना है. तो प्रोडक्ट कैसे आएगा? CH3 CH2, ये क्लीव हो गया. प्लस कौन है? बट Cl कितनी बार है? 3 बार है, तो यहाँ पर 3, ये 3 हो गया, तो ये 3. बाय प्रोडक्ट्स क्या आएगा? H3. ओके, सो आई हैव स्पोकन यू दैट दिस बोथ आर व्हाट? लीस्ट स्टेबल. तो इसके लिए क्या कर? ये एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड. whenever you are using PBr3, whenever you are using PBr3 by using red phosphorus and bromine. जब रेड फास्फोरस ब्रोमीन को रिएक्ट करेंगे तो PBr3. उसी तरह से अगर PI3 चाहिए तो यू हैव टू यूज रेड फास्फोरस एंड आयोडीन. तो हमें अच्छा क्वालिटी का PI3 मिलेगा. Stable, you have to use this way. नहीं तो वो क्या है? Least stable है. So if I carry out the reaction by using this here is methanol plus this PBr3, product same हो जाएगा. Cleavage of C bond O, you will get answer CH3Br. Br3 है, so I'll put here is 3 times, यहाँ पर 3, and the byproduct H. Clear? Okay, students, clear, understood everybody? We'll move further. Reaction with PCl5 now. How to go with the PCl5? PCl5 में भी आपको बाय प्रोडक्ट्स रन करना है. तो मैं यहाँ पर ना साथ में टेबल के उधर बाय प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा. तो H3PO3 कंपलसरी बाय प्रोडक्ट H3PO3, और PX5 तो HCl and POCl3 बाय प्रोडक्ट कंपलसरी. PCl5 रहेगा तो HCl and POCl3 बाय प्रोडक्ट कंपलसरी. HCl का तो नाम पता है. POCl3 is called as ऑक्सीक्लोराइड. कैसे बोलना है? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, या फिर हम इसे बोलेंगे फॉस्फोरिल क्लोराइड. फॉस्फोरिल क्लोराइड. तो अगर आपको बाय प्रोडक्ट अच्छे से लर्न हो गया तो आपका रिएक्शन इजी हो जाएगा. And why I'm stressing so much on this topic? It's repeated 3 times in your syllabus. 3 बार है. एक बार तो मैंने पढ़ा लिया यहाँ पर, एक बार हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर में भी है. हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन्स एंड है. और तीसरी बार आपको आ जाएगा अल्डिहाइड्स कीटोन्स में भी आएगा वहां पर. तो सो बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आपको अभी से समझ में आ जाना चाहिए. हाँ, टेक्स्ट में सीधा सीधा लिखा है, रिफर टू दैट चैप्टर. So let us go with the PX5. So alcohol when react, अभी PCl5 डायरेक्ट ले सकते क्योंकि PBr5 और PI5 एग्जिस्ट नहीं होता है with PCl5. So this bond takes place. So here is RCl, RCl, and byproducts पता है हमको यहाँ Cl and POCl3. आपका रिएक्शन बैलेंस्ड खत्म हो गया. चलो एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूं. प्लस P, come on,
फर्स्ट रिएक्टेंट का नाम, देन प्रोडक्ट का नाम बताओ. व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्टेंट? उत्तर सांगा. जानवी, संस्कृति, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल. वैष्णवी, वेरी गुड आंसर. करेक्ट है. Cyclohexyl methanol. Correct. This answer is correct. So now let us see cyclohexyl methanol when reacted with PCl5. What will the name of the product formed? Answer right है इसका. Cyclohexyl methanol. Wrong answer. Chlorobenzene. Wrong answer. ठीक है, प्रोडक्ट ड्रॉ करता हूं मैं, आप नाम बताने की कोशिश करो. आई सॉरी. POCl3 plus HCl. Name the product. गच्छुक सर, एक मिनट. Yes, you can take your time, sir. भावेश पाटील. भावेश ऐकतोयस तू? तुला अनम्यूट केलंय भावेश. भाविनी सेठ. भाविनी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अनम्यूट कीजिए खुद को. भाविनी. हा भावेश, तू कोणत्या ब्रांच आहे? वसई ब्रांच आहे ना भावेश तुझी? मला चॅट मध्ये मेसेज टाक भावेश. ओके सर, थैंक यू. ओके सर. हाँ स्टूडेंट्स, बहुत से आंसर आए हैं बराबर. ये बहुत से बच्चों ने ट्राई किया आंसर देने की. आंसर करेक्ट है. यस, मेनी स्टूडेंट्स हैव ट्राइड दिस आंसर. श्रुति स्पीक. श्रुति नायक, यू वांट टू स्पीक समथिंग? ओके. हो जाता है, गलती से मिस्टेक बहुत होती है ना. बराबर. इसका नाम क्या है देखो, क्लोरोमीथेन. और ये सब्स्टिट्यूट फॉर्म में ना. साइक्लोहेक्साइल. सो बहुत से बच्चों ने आंसर राइट दिया है. मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर. सो गेटिंग एवरीबॉडी हियर. So cleavage of C bond O. So you can use what? PC. Now next method will go and last topic. Kasat sir, I'll take 3 minutes more for the students. Kasat sir. Yes sir. चलेगा. Kasat sir. Yes sir. चलेगा. हाँ, क्योंकि आपने मेरा टाइम लिया तो मेरे को 3 मिनट लगेगा एक. Okay. So cleavage of C bond O में हमने देखा के साथ में, फिर किया हमने PCl3 PCl5 साथ में, and last will go with the SOCl2. Will go. S stands for what? Thio.
A stands for what? Thio. So this compound name is what called as thionyl chloride. SOCl2 is called as what? Thionyl chloride. S is also called thio. Sulfur है ना? तो thio. Thionyl. CO. CO is called as carbonyl. CO carbonyl. तो उसी तरह से कार की जगह पे S आया है. S stands for carbonyl and Cl chloride. So preparation of alkyl halide by this method, thionyl method, is called Darzyn's method or Darzyn's process. What? Preparation by using SOCl2 is called as Darzyn's process. Let us see how to do. Alcohol लेना है Cl2 और इसको हम क्या करेंगे? रिफ्लक्स करेंगे. रिफ्लक्स का मतलब स्ट्रॉन्ग हीट. ठीक है. जैसे ही ये रिफ्लक्स करेंगे हम इसको हीट करेंगे, क्लीवेज ऑफ सी बॉन्ड ओ हो जाएगा सबसे पहले, तो हमें पता है, और RCl तैयार हो जाएगा. RCl. ओके. अब ये तो एक Cl रह गया ना. 1 Cl will move with the H. You will get here is HCl. अभी क्या क्या रह गया? O2 gas. SO2 gas. So in this method, SO2 gas is released. इसके फॉर्म में रिलीज हो जाता है. अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो you can use what? Pyridine. Pyridine क्या करेगा उसको? You will get here is RCl. एक बार वापस. आयुष वीडियो ऑफ कर. परत एकदा. अल्कोहल you refluxed. Reflux was strong heating in absence of water. Heat करना. Dioxide gas and HCl will be released. HCl release हो जाता है, पर अगर लगता है कुछ HCl बच गया है तो हम pyridine यूज. तो यहाँ पर ना impurities का कुछ भी ट्रेसेस नहीं बचता है. बाय प्रोडक्ट का कुछ भी ट्रेसेस नहीं बचता है. And hence हमने by using HCl, PCl3, PCl5 और अभी देखा SOCl2, इन चार मेथड में से using SOCl2. Why? Because no impurity traces are appeared on the product, and hence this is the alkyl chloride. You can do the example. That is sec-propyl chloride when reacted with when refluxed with thionyl. कर सकते हैं कि sec-propyl chloride when refluxed with thionyl chloride, it will give you sec-propyl alcohol. Alcohol है ना? I'm sorry. Sec-propyl alcohol when refluxed with thionyl chloride, it will give propyl chloride, and sulfur dioxide and HCl gas is released. It is the best method for preparation of what? It is the best method for preparation of alkyl halides. Okay. Topics are cleared. OH and Cl. Clear. We have discussed what? Cleavage of C bond O. तो हमारी दो प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस कर लिया आज. Cleavage of O bond H and getting everybody here. इसमें एक मैकेनिज्म बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू. टाटा. बाय बाय. सी यू ऑल. एवरीबॉडी स्टार्ट स्टडीइंग एट होम. गच्छू सर होमवर्क नाही दिले ना काही यांना? नाही होमवर्क नाही दिला. होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर मध्ये देतो. ठीक आहे. आणि सर आपलं होमवर्क त्यांना पोस्ट करायला सांगितलं वॉल वरती. ठीक आहे सर. येस सर. या थँक यू सो मच सर. थँक यू सो मच सर. या थँक यू स्टुडंट्स. बाय बाय.